आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके आज भी बहुत कंफ्यूजन होता है। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और अब जनरेटिव एआई, क्या ये सब सेम है? कब ट्रेडिशनल एआई यूज करना सही है और कब जनरेटिव एआई यूज करना सही होता है? और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि कब दोनों को कंबाइन करके बेस्ट रिजल्ट मिल सकता है। चलिए इस वीडियो में हम एआई को फंडामेंटल्स क्लियरली समझते हैं। वेलकम टू इंडिया लर्न्स एआई। Of generative AI, let's say what is token, what is prompt, and how we can write a good prompt, what is an AI agent, what is MCP, and so. But before going there, we need to understand when to apply generative AI and when to apply predictive AI. तो हमारा आज का टॉपिक वही है कि हम लोग थोड़ा समझेंगे predictive AI versus generative AI क्या है and how generative AI have come into the concepts of AI, ML, deep learning and so. उसके बेस पे हम लोग थोड़ा जेनेटिव एआई को भी एक्सप्लेन करेंगे, कुछ यूज केस देखेंगे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वी टॉक अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन I mean traditional or predictive versus generative AI. I'm sure that there will be new viewers so for them. So before you go to traditional versus generative AI difference, हमें समझना है कि what is machine learning, what is deep learning, what is NLP, what is generative AI. ये सारा सब कुछ nothing but they are all part of AI. Artificial intelligence bigger umbrella है और इसका पार्ट है different एआई टेक्निक्स। तो इसमें क्या आता है कि आप फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग पे एक शैलो लेवल पे काम करते हैं, एक बहुत डीप लेवल पे काम करता है। एनएलपी में क्या होता है, एक सेंटिमेंट एनालिसिस होता है जहाँ पे आप टेक्स्ट पे ऊपर काम करते हो। नाउ जेनरेटिव एआई इज नथिंग बट एन एमालगमेशन ऑफ डीप लर्निंग एंड एनएलपी। तो इसका इंटरसेक्शन में जेनरेटिव एआई आता है जिसमें मतलब जो भी आप बड़ा बड़ा वेंडर्स है लाइक गूगल, लाइक ओपन एआई, दे हैव ट्रेन्ड द होल इंटरनेट डेटा, अंडरस्टैंडिंग द कंटेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द सेंटिमेंट, यानी पूरा न्यूरल नेटवर्क मॉडल्स है जिसके ऊपर पूरा ट्रेन करके बनाया है। नाउ इसके लिए आप आई बटन पे जाइए और डिटेल में समझिए कि एआई वर्सेस एमएल, डीएल, डेटा साइंस, इस सब में डिफरेंस क्या है और इसका एक डिटेल वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। So before understanding the use generative AI versus traditional AI, we need to understand what is a structured data and what is a unstructured data. Structured data simple है कि आप टेबल लाइक अगर डेटा है इसमें रो कॉलम्स है, दैट इज a structured data. इसमें नॉर्मली आप न्यूमेरिक वैल्यूज डालते हो, डेट्स, कुछ कुछ टेक्स्ट रहता है बट दैट्स अ वेरी स्मॉल कैरेक्टर्स। ओके, देन आप बोलते हो कि दिस एक्चुअली टेक्स लेस स्टोरेज। आपके पास सपोज फॉर एग्जांपल 1-2 साल का डेटा है, 5 years 10 years का डेटा है, बट डेटा इज इन द टेबल फॉर्मेट। So mostly that comes in the structured data, and for processing the structured data or for for structured data, the AI use is the traditional AI. when is when it comes to unstructured data, let's say for example you have lots of data। आज का न्यूज़पेपर पूरा एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, कोई भी कंपनी का पेपर्स है, आप इंटरनेट पे जाओगे, देयर विल बी टन्स ऑफ इमेजेस, टन्स ऑफ वीडियोस। सो ऑल दोस लाइक वीडियोस, ऑडियोज, ईमेल्स, इमेजेस, प्रेजेंटेशन, एवरीथिंग कम्स अंडर अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर इसमें है नहीं, we need to structure it. So how we do it is through generative AI। एंड इसका प्रोसेस क्या है, इसका प्रोसेस है अब इसको मतलब चंक में डिवाइड करते हो, वेक्टराइज करते हो, दैट विल लर्न अबाउट इट इन अपकमिंग क्लासेस। बट आप थोड़ा समझ लो कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है क्या और इसके लिए आपका वेरी लार्ज स्टोरेज स्पेस, स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए, जो जिसको हम लोग वेक्टर स्टोरेज बोलते हैं। एंड आज के डेट पे नॉर्मली आप इन टोटल इंडस्ट्री में 80% इज all about unstructured data and 20% is structured data. So this जो ट्रेडिशनल एआई का जो दौर था, जो ट्रेडिशनल एआई का लास्ट मे बी 3-4 डिकेड्स, नॉर्मली आप बोल सकते हो कि ट्रेडिशनल एआई वाज देयर, ये बैंकिंग फाइनेंस में काफी ज्यादा यूज होता था। बट आज के डेट पे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के ऊपर जो नॉर्मली आप बोलते हो कि ह्यूमन लेवल पे, आज जैसा हम लोग सारे मोबाइल पे कुछ भी डॉक्यूमेंट समराइज कर रहे हैं, कुछ भी फोटो जनरेट कर रहे हैं यूजिंग मिड जर्नी, डाली और आपका जो भी आप चैट जीपीटी यूज करते हो, परप्लेक्सिटी यूज करते हो, ये सब कम्स अंडर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। वी आर पासिंग an image or we are talking to the LLM or we are sending a text message, anything and everything goes in is unstructured information। तो व्हाट इज अ मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग को एक थोड़ा समझ लो कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर न्यू टू दिस पर्टिकुलर डोमेन, यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इसका डिफरेंस क्या है। तो सॉरी, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और एनएलपी इंडस्ट्री लेवल पे कैसे काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आई जस्ट गिव यू वन सम सिंपल एग्जांपल यू अंडरस्टैंड। लेट्स से यू आर अप्लाइंग फॉर अ लोन। ओके, नाउ योर एज, your monthly income, what is your demographic pattern, everything like how many members are there in a family, where you stay and all.
Let's say there are 20 or maybe 30 input parameters. तो नॉर्मली आप कोई भी बैंक के पास जाओगे, बैंक के पास लेट्स से फॉर एग्जांपल एक ईमेल रहेगा, ठीक है? बैंक के पास एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। बैंक क्या करेगा, आपका डेटा को लेगा एंड इट विल प्रोसेस नॉट जस्ट योर डेटा, बट उसके पास आपकी तरफ बहुत डेटा पॉइंट्स है, लास्ट लेट्स से फॉर एग्जांपल 20-30 ईयर्स का डेटा पॉइंट्स है, बहुत डेटा पॉइंट। वो क्या करेगा, वो आपका डेटा को प्रोसेस करके दे विल ईदर अप्रूव योर लोन, सॉरी, दे विल ईदर अप्रूव योर लोन और दे कैन रिजेक्ट योर लोन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम है, इसको हम लोग क्लासिफिकेशन बोलते हैं। इट्स अ बाइनरी क्लासिफिकेशन, वेदर इट्स एन अप्रूव और इट्स अ रिजेक्ट। ओके, तो इस केस में क्या कर रहे हैं, इसमें इस केस में मशीन लर्निंग अप्लाई हो रहा है। तो आप कोई भी इंश्योरेंस, कोई भी लोन लेने जा रहे हो, इस जहाँ पे सपोज फॉर एग्जांपल बाइनरी आउटपुट का प्रेडिक्शन है, क्या आप क्या लोन मतलब रिपे कर पाओगे, एंड ऑल दोज फैक्टर्स बैंक एक्चुअली चेक्स, एंड ऑल दिस एल्गोरिथम्स दैट वर्क्स बिहाइंड इज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम. Now, what is deep learning? Deep learning, let's say, for example, there are a lot of industry applications. But just to give you a very quick applications, let's say you have lots of images that's black and white in your, let's say, in your album. So now you create a deep learning CNN model, convolution neural network model, and you pass all those black and white images. It senses all the pictures and it make it color. It's a colored image, it make it colored image. So all the RGB values, it just understand, and it just puts, let's see, this t-shirt it puts yellow, others blue, others stripe, and so it is a one of the use case of deep learning. आप entertainment industry में आप जाओगे, Netflix, Amazon, ये सब deep learning use करते हैं to understand your persona and then recommend the right kind of content for you. आप कोई कोई भी आप मशीन या फिर लेट्स से फॉर एग्जांपल आप मैन्युफैक्चरिंग में जाओगे, देयर आर लॉट्स ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्ट्स आर एक्चुअली जनरेटिंग डेटा। वो सबको आप डीप लर्निंग पे एनालाइज करके आप जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग का पावर प्लांट का जो भी आपका यूज केस है, आप उसको सॉल्व कर दो। दैट इज लाइक अ डीप लर्निंग यूज केस। एनएलपी, एज आई हैव ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट, लेट्स से Amazon, नेट, ये सब नेटफ्लिक्स, ये सब कैसे रिव्यू चेक करता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो कि स्मेल अमेजिंग, परफेक्ट परचेज, क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, दीज आर ऑल कीवर्ड्स। ओके, these keywords are actually giving a very positive आपका जो emotion है, whereas an absolutely waste of money, total waste of money, you can use lot of punctuation, but your intent, your sentiment, it is able to capture. Through NLP you can understand your sentiment. So it's a sentiment analyzer application. Mostly आप बोल सकते हो कि this is a wide level use case using NLP. So we understand so far what is different applications of traditional or predictive AI. Now when it comes to generative AI, so predictive AI में क्या है, predictive AI में आप फॉर एग्जांपल आप क्लासीफाई करते हो which is a डिटेक्शन, और आप कुछ प्रेडिक्ट करते हो। ठीक है, so either you classify or you predict using a discriminative or machine learning or deep learning algorithm. Okay, but let's say that 1,000 image that you have trained your model, if you are putting those 1,000 image in your generative AI model and ask the model to generate a new image, so it's a generating a new. It's not a detection. It's not a classification. It's not a prediction. It's generating a new thing. So generative model is, let's say you are dumping 10 PDFs and you are asking the model to summarize. You are asking the model to translate. You are asking the model of anything. But that is a new generation or new creation. That is purely the essence of generative AI. What is the basic difference about traditional and generative AI? अब देखो कि goal and purpose ही different है। अब traditional AI में क्या है, predictions, classifications, ये सब है। इसमें जनरेटिव एआई में इट्स नॉट अबाउट प्रेडिक्शन और क्लासिफिकेशन, इट्स अबाउट जनरेटिंग न्यू सैंपल्स। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस इज पर्पस और गोल डिफरेंट है। ट्रेडिशनल एआई में क्या करते हो, आप हिस्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन लेते हो, 2 साल 3 साल 2 महीना 3 महीना जो भी आपके हिस्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन लेते हो उसको मॉडल में फीड करते हो, एंड देन यू ट्राई टू प्रिडिक्ट और क्लासिफाई और डिटेक्ट। बट इसमें जनरेटिव एआई में आप हिस्ट्रिकल इंफॉर्मेशन आपके पास हो सकता है, वो आप यूज करके आप उसको ट्यून कर सकते हो, बट यू हैव अ जेनरेटिव मॉडल, यू हैव अ एलएलएम, तो जो ऑलरेडी उसके पास ऑलरेडी डेटा है। ओनली थिंग यू कैन प्रोबब्ली ऐड सम कंटेक्स्ट और सम प्रॉम्प्टिंग टेक्निक टू गेट द रिस्पॉन्स मच बेटर। बट ओवरऑल इसका फंडा क्या है, इसका फंडा है कि आप
जो भी दोगे, आप जो भी उसको बोलोगे थ्रू एन इंस्ट्रक्शन, वो क्या करेगा, वो नया चीज जेनरेट करेगा। दैट्स व्हाट जेनरेटिव इज ऑल अबाउट। टेक्निक्स डिफरेंट है इसमें। ट्रेडिशनल एआई में आप एमएल यूज करोगे, डीएल यूज करोगे, सीएनएन यूज करोगे। ऑल दीज आर डिफरेंट टेक्निक। डिसीजन ट्री, क्लासिफिकेशन, दीज आर ऑल रिग्रेशन, एसवीएम, दीज आर ऑल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। आप एनएलपी यूज कर सकते हो, आप कंप्यूटर विजन यूज कर सकते हो। दोज आर कम्स अंडर ट्रेडिशनल एआई। जेनरेटिव एआई में क्या है, जेनरेटिव एआई में आपका जीएन्स था, जो कि जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क, वेरिएशनल एनकोडर्स, दीज आर द बैकबोन्स। एक्चुअली ये सब बैकबोन्स है इसके। मतलब जो भी जेएनएआई आप मॉडल यूज करते हो, दिस GANs or VAs are the backbone of that. So generative model is the techniques are GANs और VAE. इसमें आप जो आज के डेट पे जनरेटिव एआई है, दैट इज बेस्ड ऑन योर transponder network. What is the difference between traditional AI and generative AI applications? अब देखो कि लास्ट जो 2-3 डिकेड है, उसमें बैंकिंग फाइनेंस में काफी सप्लाई चेन में एआई यूज हुआ था, जो भी ट्रेडिशनल एआई यूज हुआ है। और उसमें मेडिकल डायग्नोसिस, रिकमेंडेशंस, आज भी आपके पास जो नेटफ्लिक्स रिकमेंड करते हैं, अमेजन रिकमेंड करते हैं, जो भी चैनल पे, गूगल पे जाते हो आप, फेसबुक पे जाते हो, जो रिकमेंड होता है, डिमांड फोरकास्ट करते हो, कोई सेल्स फोरकास्ट करते हो, दोज आर कम्स अंडर ट्रेडिशनल एआई। Whereas if you are talking about, let's say, data augmentation, simulation, आपका image generation, आप कोई भी summarize कर रहे हो, video synthesis कर रहे हो, आज for example Synthesia, all those tools, आप Dali or Midjourney, those are image generating tools. There are email writing tools, there are music generating tools, Gana.ai and so. So all these comes under generative AI. The market of generative AI is much more bigger than that of traditional AI, which was limited. दैट इज अ बेसिक एसेंस। तो आप इसको, इसका नेक्स्ट स्लाइड में ये है, इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, like when to use which particular technique. Let's say if you have a use case, you first need to understand what is that use case is about. What is that in the sense, like, is that a detection classification, or is that a forecasting thing, or is that a some generation or some transcription type of use case. Let's say once you understand that, you first select which box it will fall in. Okay. Let's say if it is a classification, then you can ask that whether there is a pre-trained AI model, yes or no. If there is a pre-trained AI model available for that, let's say for example, कोई भी RNN, CNN, LSTM, any of this pretend, or any of, I mean, that category, pretend AI model is available, we can use traditional model. So traditional is if you have a model, pretend model in place. If you don't have a model in place, you normally would say, like, if the training data is available or not. नॉर्मली इसमें क्या है, ट्रेनिंग डेटा अवेलेबल नहीं होता है, एंड देन यू गो फॉर जेनेटिव एआई। इफ यू हैव लॉट ऑफ ट्रेनिंग डेटा, देन यू कैन गो फॉर ट्रेडिशनल एआई. Now, if there is a prediction or forecasting, let's say for example, if you have a 2 years data, 3 years data, or some months data even, you can easily go for traditional AI. Generative AI में you are mostly limited on LLM. And there are lot of pricing, I mean thing, and lot of, तो ये थोड़ा लिमिट हो जाते हो आप। जो भी आज आप मॉडल के ऊपर काफी, वेंडर्स के ऊपर आप काफी डिपेंडेंट हो जाते हो। आप कोई मॉडल वैसा ट्यून कर रहे हो, बट यू आर नॉट डेवलपिंग द फॉर द मॉडल फ्रॉम स्क्रैच। आप फाइन ट्यून कर सकते हो, कोई भी एलएलएम लेके उसको फाइन ट्यून कर सकते हो फॉर सम स्पेसिफिक एक्शन। बट ओवरऑल आपका कंसेप्ट यही है कि आप कोई एलएलएम यूज करोगे, उसको प्रॉम्प्ट करोगे। देयर आर वेज टू प्रॉम्प्ट, सिस्टम प्रॉम्प्ट, यूजर प्रॉम्प्ट, एंड सो, एंड यू कैन गेट द बेटर रिजल्ट using the prompt technique. And then this comes under generative AI. So if you have any particular question, ask in our comment section. I mean, we will definitely have, I would love to get your questions. आपके पास फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल एआई का एडवांटेज क्या है, आप कस्टमर सेगमेंट करते हो, कोई भी टेक्स्ट ट्रांसलेट करते हो, आप कोई भी, सपोज फॉर एग्जांपल आप जेनेआई यूज करना चाहते हो, पर्सनलाइज करना चाहते हो, यू वांट टू सेंड सम पर्सनलाइज ईमेल to a particular customer, you can segment, or you can use that segmentation technique, key nearest neighbor, or any of that supervised, unsupervised model for segmentation, and then you can use your generative AI model to personalize. So when to combine, if let's say, I mean, you can have your traditional AI output, and that can be useful for generative AI. So इसमें क्या है, आप ट्रेडिशनल एआई में क्या पाए हो आप, लेट्स से फॉर एग्जांपल, you segment your customer into 3 categories. Let's say this is VIP category, this is lost category, and this is maybe medium category. Now let's say you want to recommend any particular messages.
So you create a generative AI model for three of this category. That's it. So you are combining these two. टेक्स्ट आप ट्रांसलेट कर रहे हो एंड देन you can use a voice output from that. Okay, so voice output is definitely the generative AI. It's because you are using a multimodal technique here, which is voice or song or anything on audio. That is the output. So these are cases where you can combine your GenAI. And in our next class we'll be discussing about very important aspects of generative AI, like what is a token, what is a context window, what is a prompt, and different other topics. Very interesting topics. So stay tuned. Excellent work. अगर आप यहाँ तक जुड़े हुए हो तो मतलब आप एआई सीखने में एक कदम ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हो। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करना मत भूलना, शेयर करो किसी एक के साथ, और इंडियन लर्न एआई को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच।